Hello बच्चों, this question reads as a ball is projected from ground at an angle of 45 degrees with the horizontal surface. It reaches maximum height of 120 meter and returns to the ground. Upon hitting the ground for the first time, it loses half of its kinetic energy. Immediately after the bounce, the velocity of the ball makes an angle of 30 degrees with the horizontal surface. The maximum height it reaches after the bounce in meters is. So first, we need to know the key concept here, which is equation of motion. इक्वेशन ऑफ मोशन से हम v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. Where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, and s is the displacement. Now, in this case, हमको दिया गया है कि बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. तो बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है. इसके लिए जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस g. g is the gravitational acceleration. And at the topmost point of a vertical motion, we know that velocity becomes 0. So if we put v equals to 0 equals to u square plus 2 into minus g into s equals to h, that is the maximum height traveled. This gives us u square equals to 2gh, that is h equals to u square by 2g. Now we will use this formula here to solve the question. क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने बॉल को पहले 45 डिग्री एंगल पे ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है. सो दिस इज थीटा 1 which is equal to 45 degree, and suppose the velocity it is projected with is u1. Okay, now the ball hits the ground and bounces up again, makes an angle theta 2 which is equals to 30 degree, and the velocity is u2 in this case. Okay, for the first case, the maximum height is h1, and for the second case, maximum height is h2, and we need to determine the value of h2 here. तो पहले हमको करना क्या है? We need to determine the value of u1. We use this formula h1 equals to vertical component है u1 का u1 sin theta 1 उसका स्क्वायर by 2g, and u1 square theta 1 equals to sin 45 degree by 2g. तो h1 का वैल्यू हमको दिया गया है 120 मीटर. तो 120 इंटू 2 इंटू 10 इक्वल्स टू u1 स्क्वायर इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2. तो होल स्क्वायर करें तो उसका वैल्यू आएगा हाफ. सो u1 स्क्वायर इक्वल्स टू वी गेट 4800 मीटर पर सेकेंड इनका स्क्वायर होगा. ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं. इन द नेक्स्ट केस we need to apply this concept which is given in the question, that kinetic energy in the second case becomes half of initial kinetic energy. So half into half m u1 square equals to half into m u2 square. half half both sides से cancel out हो जा रहा है, m cancel out हो जा रहा है, and we get u2 square equals to half u1 square. अब u1 square का वैल्यू हमने पहले ही डिटरमाइन किया है which is 4800. ओके, तो 2 से 4800 को काट किया तो हमको मिलता है 2400. नाउ अगेन we use this formula h equals to u squared by 2g for the second case. तो इस केस में h equals to h2 and u2 sin theta 2 square by 2g. u2 का वैल्यू हमको मालूम है, that is 2400. u2 का स्क्वायर into sin theta 2 equals to sin 30 डिग्री.
साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, दैट इज 1/4 इंटू 1/2j, दैट इज 20। तो 0 0 इधर कैंसिल आउट किया, 4 से 240 को कैंसिल आउट किया तो हमको मिलता है 60, और 2 से 60 को कट किया तो हमको मिलेगा 30। सो h2 इक्वल्स टू 30 मीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर, and we can say the maximum height it reaches after the bounce is 30 meters. Hope you have understood it well, and best of luck.